This is Mayur Ushi. We are talking about the stack organization or register-based CPU organization. This is the first PPT I'm going to share, that is about the stack organization. And just see, stack is the one kind of memory where we can store the temporary unused data. So, what is the stack? A stack storage device that store information is such a manner that the item store last in first item retrieve. मीन्स ऑफ वॉट, अगर हम फर्स्ट डेटा अगर स्टोर करते हैं स्टैक में तो वो लास्ट में आउट आता है. अगर हम जो भी डेटा लास्ट में इसको सेंड करते हैं तो वो फर्स्ट आउट आता है. दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट. That is the method to transmit or retrieve the data in stack organization. It is also called last in first out LIFO list, useful for compound arithmetic operation and nested subroutine calls. So, what are the diagram according to the register? This is the diagram of a register stack. A stack can be organized as a collection of finite number of register, and the one register can store the one single bit data, and that is going to arrange in that way. So there is a B C. A is data, B is also data, C is also data. There is a number of data. This is one kind of memory. It may be full, it may be empty. When we are going to transmit the data in that memory, that data if overloaded or that memory is full, then it will be full. If the data is according to the push pop instruction, it's going to remove the data from that memory, then that memory will be empty. So there are two keys, full and empty. SP stands for the stack pointer, which data we have to read or place in that. If we are going to read the data, then we are going to use the pop instruction. If we are going to load the data, then we are going to use a push instruction. And below to that diagram, DR is there, that is the sequence of data register. So all the data can be stored in the stack in form of a register. So that's why a stack can be organized as a collection of finite number of a register. It has a finite memory according to the memory capacity of stack. Generally it is 64 bit. So register stack, in a 64 word stack, the stack pointer contains 6 bit. The 1 bit register is full, it's set to 1 when the stack is full. Empty register is 1 when the stack is empty. So see, what is that second point? This is a second point. So this is what, in a 64 word stack, the stack pointer contains 6 bit. मतलब क्या होता है कि जो 64 वर्ड का स्टैक होता है उसमें 6 बिट का हमें पॉइंटर मिलता है. सो अगेन द 1 बिट रजिस्टर फुल इज सेट टू 1 व्हेन द स्टैक इज फुल. एक बिट फुल हो जाता है जब स्टैक इज फुल. जब स्टैक फुल हो जाएगा तो वहाँ पे जो ये मैं एरो करके दिखा रहा हूँ, ये जो फुल वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तो एम्प्टी वाला पॉइंट 1 हो जाएगा. जब एम्प्टी 1 रहता है तो फुल 0 होता है, जब फुल 1 रहता है तो एम्प्टी 0 होता है. ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. when this all 64 bit all 64 words are full, then our stack is full. If we want to use that data, if we are going to use the data from the register of stack, so we require the pop instruction. Using that pop instruction, we can use the data from the stack, and the stack will be empty. So empty register is 1 when the stack is empty. This is a general information about the register stack. The data register DR holds the data to be written into or read from the stack. DR is the holding register. Whatever data we have to read or write, that will be held by that register. Next one. The stack operation, that is reverse police operations, we can generally known about that as a postfix. Reverse police or notation is a postfix notation, place operator after operands. If we are in fixed notation, that is if we are going to add the data, that is a plus b. जब हमें डेटा स्टैक में स्टोर करना है तो दैट टाइप ऑफ रिवर्स पोलिश नोटेशन विल बी देयर.
इनफिक्स नोटेशन दैट इज a प्लस बी, जो भी डेटा होता है उसको ऐड करते हैं वो आगे पास हो जाता है. सो रिवर्स पुलिश नोटेशन दैट इज a प्लस बी, फर्स्ट इनफिक्स जो इनपुट जाता है, फिर उसके बाद रिवर्स पुलिश नोटेशन में आपको ए बी प्लस ऑल्सो कॉल्ड, मतलब ए बी प्लस वन जो भी नेक्स्ट डेटा आने वाला है उसको भी आप पोस्ट फिक्स बोल सकते हैं. So infix notation and postfix, the two commands are there, and the stack operation, how stack operation will be exist. So push operation, the process of putting a new data element onto stack is known as a push operation. Push operation involves a series of steps. पुश ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि हमें डेटा लोड करना है. डेटा लोड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं वो जो नीचे दी हुई है. देयर आर 5 steps to where we can load the data in the stack memory. So first check if the stack is full. हमें पहले क्या करना होता है कि स्टैक फुल है या एम्प्टी है. हम तभी डेटा लोड कर सकते हैं जब स्टैक में मेमोरी अवेलेबल है. मतलब स्टैक अगर फुल होती है we can't use that stack. स्टेप 2 में if the stack is full produces an error and exit. वही बात है, अगर स्टैक फुल होता है तो वहाँ पे किसी भी तरीके का डेटा हम नहीं स्टोर कर सकते, तो वहाँ पे एरर आ जाता है. स्टेप 3 में क्या होता है, इफ़ द स्टैक इज़ नॉट फुल इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट्स नेक्स्ट टेस्ट एम्प्टी स्पेस, जो कि हमने पढ़ा है इससे पहले भी कि जैसे जैसे स्टैक में एम्प्टी स्पेस होता है उस तरीके से हम वहाँ पे डेटा लोड कर सकते हैं. सो अलॉन्ग विद दैट transmission of the data in that stack, that stack will be full. But see, if the stack is full, then there is no any operation. The data will be loaded if stack is empty. Step 4, add the data element to the stack location where top is pointing, and the step 5, return access. So this is the circle operation of the stack using a push operation. See now pop operation. पुश ऑपरेशन में हम डेटा लोड कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन में हम डेटा को रिट्राइव कर रहे हैं, डेटा को निकाल रहे हैं. सो एक्सेसिंग द कंटेंट वाइल रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज अ पॉप ऑपरेशन.